So you can see here the example which I take here for the total internal reflection, that is the prism. So first case, let me take, this is the first case, right, where we can see total internal reflection takes place. So if I place the prism, is it right? This is a prism in this order, and let me take the prism. तो वैसे बहुत प्रकार का होता है. So let me consider this is right angle prism. In the right angle prisms here, we can say this is 45 degree. Is it right? This is 45 degree. This is also 45 degree. तो फिर ये यहाँ पे तो definitely here it is 90 degree, because overall is 180. So this is not a right angle prism. This is what, 90 degree. So yes, definitely I can say this is right angle prism, because 45 45 overall we can say it is isosceles right angle. Is it right? Sorry, isosceles triangle. So in this prism, what happened here, if I take, this is the object, suppose AB is the object and the ray comes out from this. So suppose A का यहाँ से ray निकलेगा, the ray comes out, and since the phase is right, suppose this is PQ is a phase and here it is 90 degree, so we know the ray will come directly and PQR and falls at the face of PR में गिरा. Here you take first a normal line. After taking the normal line, you know here, since it's passed directly, normally pass kiya, so this is what 90 degree 45, so definitely this will become 45. ये 180 का हो गया तुम्हारा, है ना. Similarly here, since it's a normal line, so overall it is 90, so this will become also, this is also 45, which you can say this is angle of incident for the face PQ. ये हो गया इंसिडेंट, क्योंकि ये आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है. आफ्टर दैट डेफिनेटली सिंस 45 डिग्री इट इज ग्रेटर देन द 42 विच इज द क्रिटिकल, मतलब सो अंडर दिस सिचुएशन टोटल इंटरनल विल टेक्स प्लेस विद द सेम एंगल 45. तो 45 डिग्री में सेम एंगल में ये फिर से इधर स्ट्राइक कर रहा है. अगेन यू विल टेक अ नॉर्मल लाइन. सो व्हाट हैपन, अगेन टोटल इंटरनल. व्हाई? बिकॉज 90 है और ये 45 है. This is 45, so this is also 45, and after that incident is also 45. Again it is greater than critical, so again total internal reflection takes place. And here it strike. After striking we can say the face is what, normal, so again that's why it is come out. अब ये normal में तो 0 degree होता है, तो 0 degree is the angle of incident, so it is come out, because 0 is definitely less than critical. बाहर निकल गया. Similarly you can take this ray also, total internal. So you know what happened in this way, here the object make it what, erect to inverted. So erect to inverted करने के लिए हम लोग prism का इस्तेमाल करते हैं, but here inside the prism total internal reflections will take place. So this is the example where we can say total internal reflection takes place. There are so many other cases also you can take. Clear? Like if I place this order, अगर इस तरह से रखें इसको, this is 90, this is 45, this is 45, so I think if this is the object, this is B and this is A, so this will become the A and this is B, है ना. So here from 90, from 0 to 90, this is right, this is erect and inverted. So here in this situation also we can use, right, for what, prism, and for this case also we can use, like ये object हो गया, यहाँ से straight आया, यहाँ गिरा, from here also it comes out here, strike, and in this way here the total internal reflection takes place. Is it right? So we can say total internal reflections takes place in this order also. Is it clear? Yes. So this is, if it is AB, this is what, A dash, and what, B dash. Okay. So dear student, you can see this very important topic, that is spherical refracting surfaces, right? So in this spherical refracting surface, let me clear you that there are two types of spherical refracting surfaces are there, right? So you just note it, right? Here this is the number one. Here, right in front of you, suppose you are standing, if you stand here,
then you can see the surfaces. It is what? Convex. So you can say this is what? Convex spherical refracting surface. Is it right? You just note it here. This is convex spherical refracting surface. But in front of you, suppose if like cave है ना, cave की तरह अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे concave. Is it right? ये wax से दिख रहे हो तुम. So you know, और इसको हम लोग दूसरा साइड जो है वो मेरा infinity होगा. The second surface is my infinity. So we are in this topic called spherical refracting surface, where one side is wax, we can say convex spherical refracting surface, and another side is concave, so we can say it is concave spherical refracting surfaces, and the other side is what? Infinity. कहाँ तक ending है पता नहीं है. So on basis of this we are going to now discuss about that क्या क्या होता है इसमें. So actually we are going to find the two relation, right? दो relation हम लोग निकालेंगे. जरा गौर से सुनो, ध्यान से सुनो. Right? When the ray comes from the rarer to denser, this is a relation number 1. मतलब एक equation. Another equation is when it is coming from the denser to rarer. Is it right? Rarer to denser and denser to rarer are the two different what equation. But अब तुम बोलोगे सर कॉन्केव में या कॉन्वेक्स में? एनीवेयर. अब तुम बोलोगे सर रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा? एनीवेयर. Only two conditions you have to note, whether it's come from the rarer to denser or denser to rarer. बस. Dear student, here I take one example, like when the ray of light is passing from the rarer to denser, this is condition number 1, condition number 2 is convex, condition number 3 is the real image. Is it right? तो इन तीन केसेस में देखो, इसमें ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स है ना, रियल इमेज रेयरर से डेंसर में जा रहा है. रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सपोज μ1, here it is μ2. what is the condition? μ2 is greater than the μ1, number 1. जब ये जा रहा है तो ये नॉर्मल पॉइंट्स मिल गया मेरे को. नॉर्मल मींस एट द सेंटर पॉइंट, किसी भी कर्व का सेंटर में ही वो नॉर्मल जाके खत्म होता है. इज इट राइट? क्लास 10 में तुमने पढ़ा था. आफ्टर दैट फ्रॉम हियर यू कैन सी ये मेरा इंसिडेंट का, this is a straight path of the incident and we know this is a normal, so definitely denser में bands करेगा toward the normal. यही मैंने band कर दिया और ये real image दिखा रहा है. Clear? When it is formed, so there are two rays will pass from the object. One is this, another is straight. तो दोनों जाके यहाँ पे meet कर रहा है. And we know that the real means when both the ray will intersect, this is the position called, the point is called the formation of real image. तो ये रियल इमेज बना रहा है. ओके, वी अंडरस्टूड. क्लियर? नाउ एन ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एन एंगल टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. हियर इज इट राइट? द इमेज विल फॉर्म आल्सो टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर. That C, center of curvature, is also form angle toward the optical. All are toward the optical is alpha, beta, gamma. है ना? So what do you say about this? This is definitely U, object distance from the optical center, we know, and this is image, so this is called the image distance. Is it clear? Okay, and what is this? This is definitely the radius, है ना? This is the radius of curvature, R. Center से लेके radius हो गया. Is it right? Now we'll find the equation. Is it clear? And when the ray of light with the angle form with the normal is incident और ये refracted जो तुम्हारा इसके साथ नहीं, normal के साथ. So let me remove this point here. Is it right? With the normal is, this is the normal and this is called the R. Is it clear? Okay. So dear student, look at here. This is the first case here I have taken here. Is it right? वैसे तो अगर मैं देखा जाए तो कितना केसेस तुम बना सकते हो. Just keep it in mind. देखो जरा गौर से देखो, ये जो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. द कॉन्वेक्स कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल बोथ. तो अगर रियल एंड वर्चुअल बोथ, एंड इन ईच केस ऑफ रियल, दैट इज रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर. Here also rarer to denser and denser to rarer. That means how many cases it become 4 cases.
and in this is convex, and in the concave what happened, only it formed the real image. Is it right? So in real image there are two cases, so overall there are 6 cases can form. Is it right? So in the 6 cases I have taken here only one case where rarer to denser. Is it right? And you can see this is the image formed here, it is, but it is convex condition. Now first you take the external angle. Is it right? External angle here you can see this is I is the external बाहर का एंगल है. It is equal to, अब ये लाइन अगर यहाँ देखें तो गामा और यहाँ देखें तो अल्फा. Similarly if it is the external, then if I'll see here it is beta and here it is r. So look at here, that means I is equal to the sum of the two opposite, है ना, ये तो तुमको theorems पता था class 10 में. Similarly, the external angle always it is equal to the sum of two opposite angle inside. I is equal to alpha plus gamma, and gamma is equal to r plus beta. From here I find I and r. ये तुम्हारा पहला target होगा, to find I and r incident. After that, use the Snell's law. The ray come from the 1 to 2. 1 मतलब ये mu1 and mu2 I am talking. Is it right? So if it is passed from the mu1 and mu2, I have to write here sin I by sin r. Okay, I have written this. And how we write this multiple refractive index, वो भी सिखाया था मैंने. 2 वाला पहले ऊपर, फिर 1 वाला नीचे. Okay, this is sin I by sin r. And here all the angles are very small. Is it right? So better we write here all angles. All angles are very small, and under the small angle condition, ये तुमको ध्यान रखना है कि sin I is equivalent to I होगा. cos का जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो, बाद में हम लोग बता देंगे. वैसे tan I भी equivalent to I होता है. Clear? So that means in place of sin I and sin r I have written I and r. Written cross multiply कर लिया, mu2 r mu1 I have written. What is I and r? देखो, इसलिए हमने फर्स्ट एक्सटर्नल एंगल से I and r का राइट केसेस को we have found. Is it right? So it is gamma minus beta and it is alpha plus gamma. Now, since the angles are very small, I think you can write I को फिर tan I भी लिख सकते हैं, which I have written here. Gamma, tan beta, tan alpha, tan gamma. Is it right? Now what is tan? Tan means perpendicular by base. So look at here. If I see the gamma, अगर मैं gamma को देखूँ, ये है gamma, तो perpendicular और ये base हो गया PC. अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ perpendicular और base, इस ट्राइंगल को देखूँ perpendicular base, so everywhere perpendicular is same, PM, 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 PM. Or you can write P dash n, no problem. PC, PI, PO, PU, according to the figure. What is PC? R, PI, V, PO, U, PC, R, written. ये तो लिख लिया था, ठीक है ना? After writing this, right, up to this there is no problem. I think external angle, Snell's law, putting the value, we got this. Sign convention. अब ये sign convention 10 में पढ़ा था यार, भूल गया है तो मैं तो. कुछ नहीं लर्न करना है यहाँ पे. Sign convention लर्निंग का कुछ नहीं है, वो सिर्फ sign पुट करना है, जैसे Kirchhoff's में था. So look at here, this is the barrier. ये मेरा barrier है, ये मेरा right side है, ये मेरा left side है. जितने भी तुम्हारा रीडिंग्स लेंथ है, जितनी भी लेंथ है आर वी एफ जो भी होगा, राइट साइड में सब प्लस और लेफ्ट साइड का सब माइनस. क्लियर? लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, ये है कंडीशन. ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इन लेफ्ट, देन ओनली दिस टू साइन कैन बी पुट. सो लुक एट इट, आर प्लस V प्लस ओनली U इज माइनस, so U माइनस डाल दिया मैंने, देखो. फिर मैंने R को एक साइड कर लिया, U को. ये एक रिलेशन जो बन रहा है, इज इट? आफ्टर डूइंग दिस, ये रिलेशन ध्यान रखना, mu1 by U प्लस mu2 by V, है ना? कैसे याद रखेंगे? देखो, माइनस U में है ना, तो म्यू ऊपर वाला टर्म्स बता दें. यहाँ R आएगा, यहाँ U आएगा, यहाँ V आएगा. अब कैसे लर्न रखें? देखो ऊपर में, देखो कैसे, mu2 माइनस mu1. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. माइनस के हिसाब से जैसे फॉर्मेशन है वैसे बनेगा, आई थिंक, है ना? तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे mu2 लिख लो, यहाँ पे v लिख लो, और u में माइनस था तो मैं माइनस यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ u आ और यहाँ पे 1 था, तो देखो mu2 माइनस mu1 लिख रहा है ना ऊपर वाला टर्म. इट इज सेम, सिर्फ फर्क है कि दोनों को एक ही साथ में लिखना है. तो why I am saying this? Because you have to learn.
यस, दिस इज हेल्पफुल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, लर्न इट. दिस इज द केस फॉर रेयरर टू डेंसर. केस फॉर रेयरर टू डेंसर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब डेंसर टू रेयरर में मेरा जस्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर चेंज होगा, बाकी साइन उन कुछ चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? दिस इज द फैक्टर. क्लियर? लेट्स सी.